Hello everyone, in this video we are going to continue with transpose of a matrix. Transpose of a matrix. How we will define it? Let A be a matrix and then transpose of A is obtained by interchanging the rows and columns of matrix A. And डिनोट कैसे करेंगे इसको? इट इज़ डिनोटेड बाय ए डैश ए ट्रांसपोज और ए कैपिटल टी. So if A is M cross N matrix, then A transpose is N cross M matrix. बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अगर A हमारे पास A I J मैट्रिक्स है M क्रॉस N के, देन A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A J I N क्रॉस M. Now properties. Of transpose of a matrix. First is, अगर A ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A मैट्रिक्स आ जाएगा. सेकंड इज A प्लस बी का अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. थर्ड हमारे पास A इंटू बी ट्रांसपोज. ये कैसे ओपन होगा, रेसिप्रोकल में, बी ट्रांसपोज इंटू A transpose. Fourth is K into A transpose is equal to K into transpose of matrix A, where K belongs to real number. Okay. Now let's talk about conjugate of a matrix. So conjugate में क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके conjugate से. The matrix obtained from the matrix A by replacing the elements of A by their conjugate. Is said to be conjugate matrix.
and it is noted by A conjugate. Okay, now some properties of it. फर्स्ट इज अगर ए कॉन्जुगेट ए के इक्वल है तो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स। सेकंड वन इज अगर ए का कॉन्जुगेट करें हम और फिर उसका फिर से कॉन्जुगेट करें तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स के इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ए प्लस बी का कॉन्जुगेट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। एंड द फोर्थ वन इज के इंटू ए कॉन्जुगेट के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट where k belongs to complex numbers. Fifth, ab conjugate is equal to a conjugate into b conjugate. ट्रांसपोज रेसिप्रोकल खुलता है और ये सीधा खुल जाएगा ए बी कॉन्जुगेट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। नाउ transpose conjugate of a matrix ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा? कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी हो जाएगा और कॉन्जुगेट भी हो जाएगा। सो ट्रांसपोज इसमें क्या करेंगे? कोई भी मैट्रिक्स है देन उसका करेंगे द ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। दैट मीन्स पहले हमने कॉन्जुगेट निकाला मैट्रिक्स का और जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हमारे पास आई उसका ट्रांसपोज कर दिया। और क्या कर सकते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मीन्स पहले हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसके बाद उसका कॉन्जुगेट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ए ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का conjugate. Okay, now properties of transpose conjugate. First is A conjugate transpose किसके इक्वल आ जाएगा? मैट्रिक्स itself. Second is A transpose conjugate equal to A transpose if and only if A is real matrix. Okay. Third one is K into A transpose is equal conjugate transpose is equal to
K conjugate into A transpose conjugate, where K belongs to complex numbers. Now AB conjugate transpose is equal to B conjugate transpose into A conjugate transpose. Next is A plus B transpose conjugate is equal to A theta plus B theta. Okay. The last is K A theta is equal to K into A theta, where K belongs to R. यहाँ पे K belongs to C था और यहाँ पे K belongs to real number है. Now let's talk about some special types of matrices. Some special types of matrices. So first is symmetric matrix. Okay. What it says, a matrix is called symmetric अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए. A matrix A of order m cross एक स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर इसमें हम बात करेंगे n cross n is called a symmetric matrix if A transpose is equal to A, that is Aij is equal to Aji for all Ij. अब जब तक किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स की बात ना करी जाए, कोई भी मैट्रिक्स अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब हम स्केयर में होगा, स्केयर मैट्रिक्स. ओके. Now some properties of it. So first is for a square matrix A is equal to Aij of order n cross n, A plus A transpose is always symmetric. Okay. And B is A into A transpose into A are symmetric matrix. यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है. सेकंड प्रॉपर्टी इज if A is symmetric matrix, then all integral power of A
that is a power n, where n belongs to integers, positive integer, is symmetric. ओके कोई भी पावर करें हम ए स्क्वेयर ए क्यूब, तो ये सारे भी सिमेट्रिक हो जाएंगे व्हेन जब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो भी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बना है तो उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास इफ A is symmetric matrix, then K into A is also symmetric. Where K is any scalar. के कोई भी स्केलर हो सकता है, रियल नंबर से भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिसेस, देन उनका सम and difference is also symmetric. Provided they are defined. सम डिफरेंस डिफाइंड कब होगा, ए एंड बी का, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं हो सकता। आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए इज एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स with determinant of A is non-zero, then adjoint of A is also symmetric matrix. Okay. नाउ सेकंड टाइप है आपके पास मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका था ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा आपका, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। This is the definition. Now we will talk about the properties of symmetric matrices. So what are the properties? First one is A is skew symmetric matrix if A is
matrix then A minus A transpose is skew symmetric. Second is जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो ऑलवेज. कैसे? हमारे पास क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई और ऑल आई जे. डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, ए आई आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए आई आई फॉर ऑल आई. इसको इधर लेके आएंगे तो 2ii इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए आई आई इक्वल टू 0. सो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ऑलवेज 0 होंगे. किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, if A is skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix then A power n is symmetric if n is an even number. And A power n is skew symmetric if n is odd number. ओके, जब हमारे पास n की वैल्यू एक इवन नंबर होगी तब हमारे पास क्या बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड अगर n ऑड नंबर है तो हमारे पास बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, if A is skew symmetric matrix then K into A is also skew symmetric. इन सब प्रॉपर्टीज को आप इजीली प्रूव कर सकते हो और एग्जाम्पल भी इजीली फाउंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज if A and B both are skew symmetric matrix, A and B both are skew symmetric matrix, then their sum and difference is also skew symmetric provided they are defined. They are defined. Okay. Next property is if A and B both are skew symmetric, we are skew symmetric, then AB is
skew-symmetric if and only if AB is equal to minus BA. ओके, सो बाकी जितने भी टाइप्स इसके रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू.